This is the first space mission to conduct a soft landing on the moon's south polar region. The scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all kinds of complex data. India is at the brink of creating history. Are you ready to witness history tonight? It also A very good morning and welcome from the Mission Operation Complex of Telemetry Tracking and Command Network, an unit of Indian Space Research Organization ISRO located in Bangalore in the southern part of India. My name is Radhakrishnan and I have with me my colleague Dr. Alok, who will be bringing to you the live coverage of the Chandrayaan-2 mission in English and Hindi. Today, we are all awaiting anxiously to witness the final phase of critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan-2, wherein Indian lunar lander named Vikram will be making the soft landing on the surface of the moon. We are approximately 28 minutes away from this important event. For the viewers, just a quick update on the Chandrayaan-2 mission. Chandrayaan-2 spacecraft is a composite unit consisting of three independent modules, named an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragyan, which is housed inside the lander unit. At the time of launch, all these three modules are held together as a single spacecraft called Chandrayaan-2, and the total mass of Chandrayaan-2 at launch was 3,850 kilograms. As you are all aware, launch of Chandrayaan-2 spacecraft took place on 22nd of July on board India's heaviest GSLV Mark III launcher from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. The launcher has successfully placed Chandrayaan-2 into an elliptical transfer orbit around the Earth. Subsequently, Chandrayaan-2 composite module raised its orbit around the Earth by using its rocket propulsion system in preparation to move from the earthbound phase to the lunar transfer phase. Now, if you look at the overall sequence that has happened since the Chandrayaan-2 was inserted into the orbit, the Chandrayaan-2 spacecraft was eventually captured into an orbit around the moon, and later it performed almost 4 lunar-bound maneuvers and lowered its orbit to almost 100 kilometers around the Earth. You may be aware, on 2nd of September, which was 5 days ago from where we are today, the orbiter and the lander module were separated from each other. And the very next day, after the orbiter and lander module got separated, and the lander Vikram module performed two deboost operations just to move the orbit from an orbit of 100 by 100 kilometers to an orbit of 30 kilometers by 100 kilometers around the moon. So as on date, where we are almost 26 minutes away from the launch. And the orbiter module is rotating at an orbit of around 100 kilometers around the moon. And we have the Vikram lander module, which is moving in an orbit of 30 kilometers by 100 kilometers. And since the launch
प्रधानमंत्री जी का उत्साह देखने लायक, हर छोटी छोटी चीज का बड़ी बारीकी से निरीक्षण करते हुए, चहलकदमी करते हुए धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हुए। भारतीय वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच एक बार फिर से मुझे याद आता है जब मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए इसी तरह हमारे बीच आए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, और ये दोबारा एक बार फिर से सभी से परिचय लेते हुए डॉक्टर के राधाकृष्णन, इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, उनके पीछे थे प्रोफेसर के विजय राघवन जी जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इस तरीके से फिर से एक बार उन्होंने डॉक्टर सुरेश जी के सामने उनसे हाथ मिलाया, डॉक्टर टी.के. एलेक्स जी, डॉक्टर पी.एस. गोयल जी, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करते हुए। So the countdown is at minus 12 minutes. So within the next 12 minutes, you will have the command that we issued for starting the descent phase of Vikram lander. So Honorable Prime Minister of India is seated in the dignitaries gallery along with some of the other senior officials of ISRO as well who are here. And in the dignitaries gallery, we also have some of the other prominent and very important dignitaries who will be witnessing the launch. As you would have seen during the coverage, we have a lot of students who have been invited here to witness the launch. This is basically the students who are here have been selected based on the online space quiz competition that was conducted for the students who are in the range of class 8 to 10 across all the states in India. And finally, 2 students from each of the state and union territories have been selected to witness this historic lunar landing event along with Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. So today we have amongst us nearly 84 plus school students who are here in the Mission Operations Complex. जी हाँ, आपको याद दिलाता चलूं कि चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम मिशन चंद्रयान-1 श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था। अंतरिक्ष यान चंद्रमा की रासायनिक खनिज विज्ञान उड़ान ने चंद्रयान को 181.617 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि अभी आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग के जरिए उसी तरह की उन्हीं घटनाओं की याद दिलाई जाए ताकि हम यहाँ से और आगे बढ़ सकें। इस समय हम करीब 11 मिनट की दूरी पर ये एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग आपके लिए, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आपको याद दिला सकें कि कैसा था वो प्रक्षेपण। Mission Control Center at the Mission Operation Complex. काम करना ना, ये ना लाइव चल रहा है, ठीक है? ये लाइव चल रहा है इसमें, जिसमें ना कोई ना बोले यहाँ पे, ठीक है ना? तो अंदर जाएगी आवाज़, ठीक है सर। कोई आके बता देना, बोलेगा नहीं, ठीक है? By 39,000 kilometers around the Earth. So once the orbit of the Chandrayaan-2 was 39,000 kilometers with a perigee of 170,
as you can see on your screen, using its propulsion system, it performed 4 earthbound maneuvers to raise the orbital altitudes in preparation to enter the lunar transfer trajectory and then go to the lunar orbit. So right now what you're seeing is the orbit of Chandrayaan-2 being raised around the Earth, and once this is done, the spacecraft has entered the lunar transfer trajectory phase and it is proceeding towards the moon's orbit, and very shortly you will see the Chandrayaan-2 spacecraft has been captured in the sphere of influence around the moon, and it will start orbiting with an altitude of almost 18,000 kilometers by 120 kilometers, and then subsequently using the propulsion system of the Chandrayaan-2, which is the orbiter module, the orbit was brought down to an altitude of almost 100 kilometers. In the process of bringing it down from 18,000 to 100 kilometers around the moon, it performed nearly 4 orbital descent maneuvers, and you can see now the orbiter and the lander Vikram will get separated, and eventually the Vikram lander module, using its propulsion system, has brought down the altitude to something like 30 kilometers by 100 kilometers. So as I have mentioned repeatedly, the Vikram lander module is presently in an orbit of around 30 kilometers by 100 kilometers. 30 kilometers is the minimum height above the lunar surface where the powered descent operations will be starting, and I think we are very close to the event when the Vikram lander thruster will be initiated. Roughly around 6 minutes to go before we start the power descent operations. जी हाँ, हम करीब करीब 7 मिनट की दूरी पर जहाँ से डिसेंट शुरू होना है, जहाँ से उस घड़ी की शुरुआत होगी जब हम लगभग 35 किलोमीटर की पेरिजी की ऊंचाई से हम उतरना शुरू करेंगे। जिन दर्शकों ने अब इस अभियान को शुरू से फॉलो नहीं किया है, उनकी जानकारी के लिए संक्षेप में बता दूं कि प्रक्षेपण के पश्चात 24, 25, 29 जुलाई और 6-8 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा में 5 मैन्यूअर्स किए गए, जिसमें तकरीबन 508.4 किलोग्राम प्रणोदक का कुल 3604.254 सेकंड तक प्रज्वलित कर कक्षीय परिवर्तन किया गया, जहां कक्षा उत्थान किया गया। इसके पश्चात 13 अगस्त को ट्रांस लूनर इंजेक्शन TLI के दौरान 166.8 किलोग्राम प्रणोदक की खपत कर 158.309 मीटर प्रति सेकंड की वेग वृद्धि की गई और चंद्रयान-2 को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर मिशन के लंबे अतिपर्वणीय पथ पर एक ऐसा बिंदु आता है जो चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र के अंदर होता है। इसे लूनर ऑर्बिटल इंसर्शन या LOI कहते हैं, और इसी बिंदु पर भू आदेश के द्वारा कक्षा की दिशा में परिवर्तन कर उसे चंद्रमा की दीर्घ वृद्धि कक्षा में पहुंचा दिया जाता है। फिर 20, 21, 28, 30 अगस्त और 1 सितंबर को 745.04 किलोग्राम प्रणोदक को कुल 4422.806 सेकंड तक प्रज्वलित कर चंद्रमा की निम्न कक्षा में प्रवेश करा दिया गया। इस समय पेरिलुइन लगभग 120.5 किलोमीटर और एपोलुइन 126.1 किलोमीटर प्राप्त कर लिया गया है। आप अपने स्क्रीन पर इसरो उपग्रह केंद्र के UR राव उपग्रह केंद्र के विभिन्न वरिष्ठ वैज्ञानिकों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हुए देख पा रहे हैं, क्योंकि इस समय हम केवल 5 मिनट की दूरी पर हैं और हर छोटी बड़ी घटनाएं जो भी इस समय लगातार घट रही हैं उनका बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। और जिस समय हम करीब 1:38 सुबह के हम चंद्रमा के उस बिंदु पे पहुंचेंगे जहां ऊंचाई करीब 35 किलोमीटर होगी, उसी क्षण में ऑर्बिटर भी जो होगा वो बिल्कुल उपग्रह के ऊपर होगा, इस तरह से ताकि हम उसके चित्र प्राप्त कर सकें। So minus 3 minutes 53 seconds before we start the power descent operation. Just to give a quick update on the way the total power descent operation for the Vikram lander would be carried out. The descent operation would, as you can see on the screen, we are at 3 minutes to go before we start these operations. So Vikram lander would commence from an altitude
of 30 kilometers, and once this descent operation has started, it will be for a duration of nearly 15 minutes before it touches down on the lunar surface. And the Vikram landing sequence is achieved through an autonomous landing sequencer. And just to give an update, the final state vectors and other parameters have already been loaded into the Vikram lander 4 hours prior, so it's all ready to go and start its operations. So as per the power descent plan, it's expected to start at 1 hour 38 minutes Indian Standard Time. As I mentioned, we are just less than 3 minutes now, and this entire power descent operation will be carried out in 4 different phases of operation, namely the first phase, which is the phase referred as rough braking phase, will bring the spacecraft from 30 kilometers to an altitude of almost 7.4 kilometers. The second phase after the rough braking phase will be attitude and absolute navigation control phase, which will enable the spacecraft to travel from 7.4 to 5 kilometers. And then immediately we will have the third phase of operation, which is the fine braking phase, where we bring down the spacecraft from 5 kilometers to almost at an altitude of 400 meters above the surface where the landing is supposed to happen. And eventually from 400 kilometers, the spacecraft will not have any forward moving velocity. It will be only used to have a vertical descent for a touchdown. So the final phase of operation after the fine braking phase will be the terminal descent phase, where the Vikram lander will be brought from an altitude of 400 meters to 100 meters to 60 meters to 10 meters and finally the touchdown. So as we go through these operations, as I mentioned, it will be a 15 minutes of descent operation. Once the activity is initiated, we will be bringing you some of the flight parameters and the status, how the total operations are going on. So each of these phases during the power descent are very critical and important in its own way, as it has a very specific objective and the goals to be achieved during this entire phase of operations. So maybe another 1 minute, 19 seconds to go. The further update as far as the descent operation is concerned, the Vikram lander has 4 main propulsion engines, each generating a thrust of nearly 800 newtons. And out of these 5 main engines, the 4 engines are throttleable liquid engines, which means we will be able to regulate the thrust of the engine, like increasing the speed or decreasing the speed of the engine to achieve the required deboost velocity. Another 48 seconds to go before this deboost or firing of the engines. The 4 thruster engine, throttleable engines are carried out. जी हाँ, थोड़े तनाव भरे क्षण जरूर हैं, क्योंकि हम बेहद करीब 32 सेकंड के जब विक्रम को धीरे धीरे उतारा जाएगा नीचे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे उतरते समय उसके वेग मान को कम किया जा सके, जिसे हम रफ ब्रेकिंग फेज कह सकते हैं। और इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान हम जो उसमें लगे हुए और थ्रॉटलेबल इंजन हैं, जिससे उसके प्रणोद बल को कम किया जा सकेगा, ऐसे 4 इंजन 4 कॉर्नर पे लगे हुए, 4 कोनों पे लगे हुए हैं। और ऐसा ही एक 800 न्यूटन का इंजन जो है बीच में लगा हुआ, और बिल्कुल हम करीब इस समय विक्रम डिसेंट के स्टार्ट कर दिया गया है। और रफ ब्रेकिंग जो वो है घड़ी है, वो बहुत ही नज़दीक होगी। इस समय हम धीरे धीरे अब उसकी गति को कम करना शुरू करेंगे। Yes, the descent phase of operation for the Vikram lander has just been initiated with the firing of the 4 liquid engines, which I was mentioning, the 4 throttleable engines. The activity has just started, and right now we are at 35 seconds since the engines have fired. And just to give an update, the Vikram lander, when it was in an orbit of around 30 kilometers, when the descent operation started, it had a velocity of nearly 1640 meter per second. So what we are going to do through this entire phase of 15 minutes of operation, when the power descent will be done, is to make this orbital velocity of the Vikram lander from 1640 meter per second to almost 0 meter per second, so that the spacecraft could land on the surface of the moon. So the activity has just initiated. As you can see on your screen, the view of the Mission Control Center, which Chairman ISRO and Director of URSC, and Dr. Suresh briefing
the Honorable Prime Minister about the flight event that are going on. So the time elapsed is almost 1 minute 28 seconds. जी हाँ, So- धीरे धीरे गति कम होती हुई 1507 मीटर प्रति सेकंड हो चुकी है, जबकि हमने 1630 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रारंभ किया था। और हर घड़ी की, हर क्षण की जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री को पहुंचाई जा रही है। और इस समय हम करीब करीब 1 मिनट 52 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं और वेगमान लगातार घटता हुआ। और यही उद्देश्य भी हमारा है कि धीरे धीरे जो रफ ब्रेकिंग है उसके दौरान चारों जो इंजन हैं, उन चारों 800 न्यूटन वाले इंजन जो भारत ने पहली बार विकसित किए हैं, ये पूरी जो प्रणोद प्रणाली है ये पहली बार विकसित की गई है। और इस प्रणाली के चारों इंजन लगातार फायर करते हुए, प्रज्वलित होते हुए और लगातार वेगमान घटता हुआ। So almost 2 minutes 20 seconds, and we expect this rough braking phase which was just initiated to last for nearly 10 minutes, during which time the velocity, the orbital velocity which the Vikram lander possessed of the order of 1640 meter per second should reach to something like 140 meter per second at the end of the rough braking phase. So basically during this phase it's a real brute force of operation where we are trying to kill the velocity which the spacecraft currently has, making it revolve around the moon with an orbital altitude of 30-100 kilometers. So I am seeing on my screen that the velocity from 1680 meter per second has come down to almost 1300, so nearly 350 meter per second velocity for the Vikram lander has been reduced. 3 minutes have elapsed, and maybe another next 7 minutes we should have quite a substantial reduction in the velocity to ensure that at touchdown we have almost near 0 meter per second velocity to ensure that the Vikram lander has a soft landing on the surface of the moon at the very desired landing site location. So we are right now in the rough braking phase of operation, nearing 3 minutes 39 or 40 seconds, and almost I would say 480 meter per second velocity has been reduced, which is clear indication that the entire operations during which the 4 throttle engines are being fired has been performing absolutely nominally, and the reduction in the velocity and the down range, the range it has to, after the descent operation has started, it has to cross almost a range of 600 kilometers before it lands at the predefined destination. So I am seeing a very close match with the pre-flight and the flight prediction. The velocity of the Vikram lander has come very close to 1100 meter per second, so almost to 500 meter per second velocity reduction has happened in just 4 minutes. So another 6 minutes to go before we reach the mission objectives of the rough braking phase. जी हाँ, करीब करीब 6 मिनट का समय 4 मिनट का समय व्यतीत हो गया है। 6 मिनट लगभग और वेगमान कम करने के लिए लगेंगे। इस समय करीब करीब जो सारी गतिविधियां हैं, सारी प्रणालियां हैं, वो अभीष्ट रूप से चल रही हैं। इस अवतरण को सुरक्षित और कोमल या सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग बनाने के लिए अनेक अभिकल्पनाओं पर विस्तृत चर्चा और गहन अध्ययन के पश्चात ही विशेषज्ञों ने अनुमति प्रदान की थी। इसरो के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसरो ये पहली बार करने जा रहा है। इसके लिए प्रोपल्सन, ऑनबोर्ड कंप्यूटर, सेंसर्स, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, थर्मल जैसी अनेक प्रणालियों के उचित सामंजस्य से ये सब कुछ संभव हो सकेगा। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी गतिविधियां स्वचालित रूप से चल रही हैं। इस दौरान लैंडर में लगे अनेक संसूचक जरूरत के अनुसार आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं और ऑनबोर्ड कंप्यूटर उचित गणना के आधार पर यथोचित निर्णय लेकर लैंडर को चंद्रमा की तरफ उतरने में सहायक सिद्ध हो रहा है। करीब करीब 939 मीटर प्रति सेकंड का वेग हम प्राप्त कर चुके हैं। लगभग अगर हम बात करें तो करीब करीब 700 मीटर प्रति सेकंड का वेग हम घटा चुके हैं। इसलिए हम ये बड़े कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि हमारी जो ये प्रणोदक प्रणाली है, प्रोपल्सन सिस्टम है, ये बड़े ही सुचारू रूप से गतिविधियां अपना निष्पादन दे रहा है। इस समय हम करीब करीब 6 मिनट व्यतीत कर चुके हैं और आने वाले 4 और मिनट में हम लगभग जो इसका क्षैतिज मान है वो हम काफ़ी कम कर पाएंगे। करीब करीब 0 के बराबर, लगभग 140 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगा।
So almost 6 minutes have elapsed since we started the power descent operation, and we are still in the rough braking phase with the next 4 minutes to go. And if I look at the velocity that has dropped from the time the power descent operation was initiated, nearly 50% of the orbital velocity has been reduced. So we started with 1680 meter per second. Presently, the Vikram lander is descending towards the lunar surface, and it has a velocity of 760. So we expect in the next 3 minutes, the velocity should come down to something like 146. So on your screen, you can see the plot where we have on the x-axis the downrange, and on the y-axis is the altitude. So I think altitude has Alok has come down quite substantially now. We are almost maybe in the range of 10 to 20 kilometers. And velocity also is, yeah, I think maybe. So a very close match with respect to the pre-flight predictions, and which clearly indicates the 4 throttleable steering engines, which has been basically designed for this Vikram lander for the first time, has been performing extremely well. And as per the plan, the timeline is going very precisely, 7 minutes 34 seconds, maybe another 2.5 minutes to go. And we have almost touched the 630 meter per second, so maybe another 500 meter per second velocity is what we expect to get it reduced. At the same time, if you look at the downrange, it has traveled quite close to the landing site now. Just we are maybe 75 kilometers away from the actual landing site. When the maneuver was initiated, we were almost 600 plus kilometers, and yeah, and quite a velocity, and I think it has been getting reduced quite substantially. The one thing I would like to just mention here, during the descent phase of operation, as I mentioned, the rough braking phase is the real brute force of velocity reduction. And since we are trying to bring an object from an orbiting around the lunar surface to have a touchdown, there is a need for us to reduce the velocity. It's something like braking, and quite eventually the job is being done now. Maybe it's around 450 meter per second, and another 2 minutes plus to go. In fact, I think when we reach an altitude of almost the target for this particular rough braking phase is to attain an altitude of 7.4 kilometers, when the velocity should have touched almost 146. So maybe another nearly 2 minutes, maybe 1 minute to go. जी हाँ, लगभग एक मिनट की दूरी पर हम लोग करीब जो लैंडिंग साइट है उससे करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, और जो ऊंचाई है वो भी करीब 10 किलोमीटर बच गई है, और इस समय जो वेगमान है वो भी करीब 376 मीटर प्रति सेकंड है। इसे और भी कम करना होगा, इसलिए जो चारों इंजन हैं वो भी अभी तक प्रज्वलित हैं। हम करीब 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब पहुंचेंगे, उस समय जो एब्सोल्यूट नेविगेशन फेज है वो शुरू कर दिया जाएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस समय जो लैंडर है वो थोड़ा सा अपने अक्ष से झुका हुआ होगा, और लगातार इस समय हम सारे वैज्ञानिक, आप अगर देख पा रहे होंगे, 73.3 वर्टिकल वेलोसिटी, और डाउन रेंज जो है करीब 18 किलोमीटर हम दूर पर हैं लैंडिंग साइट से। और इस समय जो इमेजर है उसका डेटा भी डाउनलोड हो रहा है। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी बाकायदा ऑन हो चुके हैं। इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हर वैज्ञानिक लगातार छोटे आंकड़ों पर नजर बनाए हुए है, और आप सुन पा रहे थे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ 210 मीटर प्रति सेकंड की जो वेगमान है वो कर लिया गया है। और रफ ब्रेकिंग सिस्टम जो है, रफ ब्रेकिंग जो फेज था वो लगभग अपने अंतिम दौर पे finished. So we have finished the rough braking phase now, because the target for that was 7.4 kilometers and the velocity was nearly 140. So the Vikram lander has successfully completed the rough braking phase, and now we have entered the next phase of operation, which is the absolute navigation or attitude control phase. And this particular event is going to last for nearly 38 seconds. And the 4 throttleable engines are continuously on, and we see the velocity is something like 86 meter per second, and roughly 4.43 kilometers away from the landing site.
So all going well. Just awaiting the announcement for completing. Yes, the rough braking phase has been successfully completed, and we have entered the next phase of braking operation, which is the fine braking start, which is going to basically commence from 5 kilometer altitude, and this particular operation is going to last for nearly 96 seconds, wherein the Vikram lander will be reaching an altitude of just 400 meters above the landing site for initiating the vertical descent operations. So we are almost 11 minutes 52 seconds after the descent operation has started, just awaiting the announcement for the end of fine braking phase. Maybe in another few seconds we should hear the announcement that the fine braking phase of operation has been completed, and we expect at the end of this the vehicle to reach an altitude of almost 400 meters. And the velocity right now, if you look at the plot, we have the Vikram lander has a horizontal velocity of nearly 48 meters and vertical velocity of 60 meters per second. जी हाँ, करीब करीब 12 मिनट 30 सेकंड का समय व्यतीत हो चुका है। हम लोग काफ़ी नज़दीक चंद्रमा की सतह पर, और फाइन ब्रेकिंग जो है वो है फेज़ है, वो लगभग ख़त्म होने की स्थिति में। Just waiting for the confirmation for the fine braking end. तनाव भरे क्षण होते हैं जब इस तरह की कोई भी घटना के हम बहुत ही करीब होते हैं, क्योंकि वर्टिकल डिसेंट स्टार्ट होने वाला है। इसमें सारे संसूचक जो हैं वो लगातार अपनी गतिविधियां प्रदान कर रहे हैं। After the completion of the fine braking end, we will have the vertical descent operations, where the spacecraft will be moved from nearly 400 to 700 kilometers down to the lunar surface. The screens are showing the countdown. Also the path that lander Vikram will take, as we are moments away to see that touchdown happening. Chandrayaan 2 is an Indian lunar mission that aims to improve our understanding of our closest neighbor, the moon. Discoveries that perhaps will contribute to national development and also serve humanity as a whole. These young students have participated in the space quiz, and they are here to witness the historic event. At ISRO, as the boundaries of India's capabilities in space continue to expand, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, encourages exploration of space potential and also application of space technologies to help ease of living. Prime Minister, in his Man Ki Baat address, had invited students to participate in space quiz. His appeal had got an overwhelming response, and today, apart from the scientists and other stakeholders, we have students not only of India but also of Bhutan to witness the soft landing of Chandrayaan 2 on the south polar region of the moon. So what makes Chandrayaan 2 special? This is the first space mission to conduct a soft landing on the moon's south polar region. The scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all kinds of complex data. India is at the brink of creating history. Are you?
ready to witness history tonight. It all starts. A very good morning and welcome from the Mission Operation Complex of Telemetry Tracking and Command Network, an unit of Indian Space Research Organization, ISRO, located in Bangalore in the southern part of India. My name is Radhakrishnan and I have with me my colleague Dr. Alok, who will be bringing to you the live coverage of the Chandrayaan-2 mission in English and Hindi. Today, we are all awaiting anxiously to witness the final phase of critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan-2, wherein Indian lunar lander named Vikram will be making the soft landing on the surface of the moon. We are approximately 28 minutes away from this important event. For the viewers, just a quick update on the Chandrayaan-2 mission. Chandrayaan-2 spacecraft is a composite unit consisting of 3 independent modules, named an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragyan, which is housed inside the lander unit. At the time of launch, all these 3 modules are held together as a single spacecraft called Chandrayaan-2, and the total mass of Chandrayaan-2 at launch was 3,850 kilograms. As you are all aware, launch of Chandrayaan-2 spacecraft took place on 22nd of July on board India's heaviest GSLV Mark III launcher from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. The launcher has successfully placed Chandrayaan-2 into an elliptical transfer orbit around the Earth. Subsequently, Chandrayaan-3 composite module raised its orbit around the Earth by using its rocket propulsion system in preparation to move from the earthbound phase to the lunar transfer phase. Now, if you look at the overall sequence that has happened since the Chandrayaan-2 was inserted into the orbit, the Chandrayaan-2 spacecraft was eventually captured into an orbit around the moon, and later it performed almost 4 lunar-bound maneuvers and lowered its orbit to almost 100 kilometers around the Earth. You may be aware, on 2nd of September, which was 5 days ago from where we are today, the orbiter and the lander module were separated from each other. And the very next day, after the orbiter and lander module got separated, and the lander Vikram module performed 2 deboost operations just to move the orbit from an orbit of 100 by 100 kilometers to an orbit of 30 kilometers by 100 kilometers around the moon. So as on date, where we are almost 26 minutes away from the launch, and the orbiter module is rotating at an orbit of around 100 kilometers around the moon, and we have the Vikram lander module, which is moving in an orbit of 30 kilometers by 100 kilometers. And since the launch of Chandrayaan-2 on 22nd July, today is the 40th day when landing is expected to take place. So right now we are around 26 minutes away from the start of the most important and crucial powered descent operations. And once this powered descent maneuver is initiated, it's expected to take roughly around 15 minutes for the lander Vikram to make a soft landing on the surface of the moon. नमस्ते, सुप्रभात और आने वाला दिन शुभ हो। इसी संदेश के साथ मैं आलोक श्रीवास्तव अपने वरिष्ठ वैज्ञानिक साथी श्री राधाकृष्णन जी के साथ आप सभी देश विदेश के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम इस समय इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ट्रैक के मिशन कॉम्प्लेक्स से इस बहुचर्चित क्षण का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहे हैं। उपलब्धियों के भारतीय आकाश का एक और देदीप्यमान सितारा चंद्रयान-2 के रूप में परिणति के शिखर पर पहुंच चुका है, जिसमें चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम और उसके अंदर संयोजित रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 2 क्रैटरों मैग्नीज सी और सिम्पेलिस एन के बीच मुख्य संभावित अवतरण क्षेत्र SLS 54 PLS-1 जो 70.90267 साउथ अक्षांश या लैटिट्यूड और 22.7811 ईस्ट पूर्व
देशांतर या लॉन्जिट्यूड के बीच उतरकर आज भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अक्षांश और देशांतर पर उतरने के लिए लगभग 84 मिनट पहले ही पूर्व निर्धारित निर्देशांकों 70.89992 साउथ अक्षांश और 22.7811 पूर्वांतर देशांतर को लैंडर के कंप्यूटर को भेज दिया गया है। किन्हीं तकनीकी कारणों के चलते अगर ये संभव न हो सका तो इसरो ने इसके लिए दूसरा विकल्प भी तैयार रखा है, जो ALS-0, ALS-1 जो 67.74915 साउथ अक्षांश और 18.46947 वेस्ट देशांतर लॉन्जिट्यूड का चयन कर लिया गया है। आज के दिन तक पहुंचने से पहले चंद्रयान 2 की 48 दिनों की ये लंबी सुनियोजित यात्रा चुनौतियों, कल्पनाओं और यथार्थ की गणनाओं से भरी हुई थी और आज ये यात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। इस संपूर्ण यात्रा का वृत्तांत अगर सार संक्षेप में कहें तो केवल इतना कि एक तरफ चुनौतियों की कमी नहीं थी तो दूसरी तरफ चंद्रयान 2 के सृजनकर्ताओं के आत्मविश्वास और तकनीकी नेतृत्व में भी कभी कोई कमी नहीं आई। तभी आज भारतीय वैज्ञानिकों और उनका ये अभियान हर कसौटियों पर खरा उतरा है। तभी ये अभियान तकनीकी और एक लंबे इंतजार के बाद आज वो घड़ी आ ही गई जब हम अपने इस अभियान को पूरा करने के साथ ही एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होगा। किसी भी अंतरिक्ष विज्ञान समृद्ध राष्ट्र के लिए वो दिन बहुत मायने रखता है जब वो शेष विश्व की तकनीकी और विज्ञान के उन्नत राह पर कदम से कदम मिलाकर चलने को तत्पर हो और तैयार हो। गर्व और उत्साह, आत्मविश्वास और प्रगति पथ पर अग्रसर होने की चाह जैसी भावनाओं का मिला जुला प्रवाह आज चंद्रयान 2 के साथ हर भारतीय के दिल में जागृत है। इस समय आप मिशन कॉम्प्लेक्स के अंदर का ये विहंगम दृश्य देख रहे हैं। बड़ी बेसब्री से हर भारतीय वैज्ञानिक आंकड़ों पर गहन नज़र बनाए हुए है। हर आंकड़े अपने आप में एक पूरी कहानी बयान करते हैं। The countdown is at minus 22 minutes, 2 seconds to go. After 22 minutes, you will be witnessing the power descent of the Vikram lander module. As I just mentioned, the Vikram lander module is presently orbiting in an orbit of 30 kilometers perihelion, which is the lowest altitude from the surface of the moon, and the apollon, which is the highest point of the orbit from the surface of moon, is around 100 kilometers. And once the descent operation starts, we expect to take roughly around 15 minutes. And some of the important events during the descent phase, which we'll be covering in the subsequent point as we go closer to this particular activity. But before we do that, just to get a update on the orbiter module, which has been orbiting in an orbit of around 100 kilometers. As you are all aware, the total mass of orbiter module is 2,369 kilograms. At launch, we had the composite module of orbiter and the Vikram lander, which was 3,850. So the orbital module, now that it has got separated from the Vikram lander, has a mass of almost 2,370 kilograms. And out of this total mass, the orbiter, the fuel orbital carried was almost 1,683 kilograms. So eventually, if you look at the capability of the orbiter, almost 70% of its mass is the fuel. And the primary reason for requirement of such a large quantity of fuel is basically to raise the orbit from the Earth to the Moon and then lower it down very close to the Moon. As I already mentioned, when the spacecraft was injected in an orbit of around 39,000 kilometers around the Earth, eventually the orbit using the propulsion system of the orbiter was raised to 400,000 plus kilometers to get captured in the sphere of influence of the Moon. So the orbiter model has a single engine which has performed nearly 10 orbital raising and lowering maneuvers, and in the process, if you look at it, is almost operated for nearly 10,000 plus seconds, which is
quite a substantial time as far as the number of times and the duration for which the thruster was fired. So orbiter, in addition to all the technological elements and the challenges, has 8 scientific payloads on board, and which are primarily meant for several scientific purposes, namely carrying out the 3-dimensional mapping of the lunar surface, chemical composition, high-resolution imaging of the landing site, mapping lunar craters in the polar regions, in addition to study of lunar exosphere. So the life of the orbiter right now is around 1 year in orbit, as it will be orbiting around 100 kilometers from the surface of the moon, and as I mentioned, several scientific measurements. So the countdown is now minus 19 minutes. So on your screen you can see a plot of the time when the Vikram is going to descend from an altitude of almost 30 kilometers. It's going to cover nearly 600 plus kilometers at touchdown, and we are very close to that particular event to happen. As I mentioned, during the powered descent time, it will be several phases over which the orbiter will be brought down to the lunar surface. It's not a single event where we just reduce the velocity and go to a lower altitude. It will be going through several phases of orbital altitude reduction and the velocity reduction, which we will explain as we come closer to this flight event. जी हाँ, इस समय हम लगभग 18 मिनट की दूरी पर जब विक्रम जो है वो उसका डिसेंड या उसका अवतरण शुरू होगा, अन्वेषण की तरफ बढ़ते हुए भारतीय कदम जो हैं उसी की दिशा में चंद्रयान 2 एक और कड़ी है। चंद्रमा हमें पृथ्वी के क्रमिक विकास और सौर मंडल के पर्यावरण की अविश्वसनीय जानकारियां दे सकता है। वैसे तो कुछ परिपक्व मॉडल मौजूद हैं, लेकिन चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। चंद्रमा की सतह को व्यापक बनाकर इसकी संरचना में बदलाव का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाई जा सकेंगी। वहां पानी होने के सबूत तो चंद्रयान 1 ने खोज ही लिए थे, और यह पता लगाया जा सकेगा कि चांद की सतह और उपसतह के कितने भाग में पानी है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव विशेष रूप से दिलचस्प है, क्योंकि इसकी सतह का बड़ा हिस्सा उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिक छाया में रहता है। इसके चारों ओर स्थायी रूप से छाया में रहने वाले इन क्षेत्रों में पानी होने की संभावना अधिक होगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र ठंडे क्रेटर्स जो गड्ढे हैं, वहां पे प्रारंभिक सौर प्रणाली के लुप्त जीवाश्म रिकॉर्ड मौजूद हो सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं डॉक्टर BN सुरेश को, डॉक्टर DK एलेक्स, ये 2 महान वैज्ञानिक जो हैं भारत के एक तरह से स्तंभ कहे जा सकते हैं, जिन्होंने रॉकेट में और उपग्रहों में विशेष भूमिका निभाई है। आप अंदर का दृश्य देख पा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो इस तरह के कई अंतरिक्ष अभियान भारत भेज चुका है। एस्ट्रोसैट था, मंगल कक्षत्र मिशन था, चंद्रयान 1 था, और इसी तरह के अभियान आने वाले वर्षों में और भी हैं जहां पे इस तरह के अभियान आप देख पाएंगे। चंद्रयान मुख्य रूप से 3 मॉड्यूल से मिलकर बना हुआ है। ऑर्बिटर जो चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेगा और पृथ्वी तथा चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के बीच संकेत रिले करेगा। विक्रम लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर भारत की पहली सफल लैंडिंग के लिए अभिकल्पित किया गया है। प्रज्ञान रोवर ये 6 पहियों वाला वाहन है। इसका नाम प्रज्ञान, जो संस्कृत के ज्ञान शब्द से लिया गया। ये पहला अंतरिक्ष मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर सफलतापूर्वक लैंडिंग का संचालन करेगा। पहला भारतीय अभियान है जो स्वदेशी तकनीक से चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। पहला भारतीय अभियान है जो देश में विकसित प्रौद्योगिकी के साथ चांद की सतह के बारे में जानकारियां जुटाएगा। और मेरे ख्याल से अगर ये आज सब कुछ सही होता है तो चंद्रमा की सतह पर रॉकेट उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है, और कुछ ही क्षणों में वो हमारे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ सकेंगे। हमारे उनके स्वागत के लिए हमारे इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विभिन्न केंद्रों के
सर एक मेरी जन्म सैलरी का करवा देना सर, 25 तारीख को दिया है। अच्छा शूटिंग निकाली थी अभी? नहीं, वो तो वहाँ से ना जैसे कि अगले महीने से मिलेगा ना। हाँ, आज ही दिया उनको मैंने, तो आज उनको बोल देना रखे सर। Witnessing the arrival of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has just arrived here at the Mission Operation Complex at ISRO's Tracking and Telemetry Command Network in Bangalore. He will be amongst us to witness today's important historic event when Vikram lander will be on the surface of the moon. So on your screen, Dr. K. Shivan, Chairman ISRO, Indian Space Research Organization, giving him a brief outline of the mission where the Vikram lander and the rover Pragyan is being explained to him. Honorable Prime Minister of India, will be moving to the dignitaries gallery. प्रधानमंत्री जी का उत्साह देखने लायक, हर छोटी छोटी चीज का बड़ी बारीकी से निरीक्षण करते हुए, चहलकदमी करते हुए धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हुए। भारतीय वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच एक बार फिर से मुझे याद आता है जब मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए इसी तरह हमारे बीच आए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, और ये दोबारा एक बार फिर से सभी से परिचय लेते हुए डॉक्टर के राधाकृष्णन, इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, उनके पीछे थे प्रोफेसर के विजय राघवन जी जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इस तरीके से फिर से एक बार उन्होंने डॉक्टर सुरेश जी के सामने उनसे हाथ मिलाए, डॉक्टर टी के एलेक्स जी, डॉक्टर पी एस गोयल जी, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करते हुए। पता नहीं अभी का दिखा रही है, countdown is at minus 12 minutes. वाला लाइव आ ही नहीं रहा है। Within the next 12 minutes, we will have the command that will be issued for starting the descent phase of Vikram lander. So, Honorable Prime Minister of India is seated in the dignitaries gallery along with some of the other senior officials of ISRO as well who are here. And in the dignitaries gallery, we also have some of the other prominent and very important dignitaries who will be witnessing the launch. As you would have seen during the coverage, we have a lot of students who have been invited here to witness the launch. This basically the students who are here have been selected based on the online space quiz competition that was conducted for the students who are in the range of class 8 to 10 across all the states in India. And finally, 2 students from each of the state and union territories have been selected to witness this historic lunar landing event along with Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. So today we have amongst us nearly 84 plus school students who are here in the Mission Operations Complex. जी हाँ, आपको याद दिलाता चलूं कि चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम मिशन चंद्रयान-1 श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था। अंतरिक्ष यान चंद्रमा की रासायनिक, खनिज विज्ञानी एवं प्रकाश भूविज्ञानी मानचित्रण हेतु चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। अभियान के इस मुकाम पर उपयुक्त होगा अगर हम उन दिनों की भी याद कर लें जब इस उपग्रह को GSLV Mark 3 M1 द्वारा 22 जुलाई 2019 को 14:43 पर 973.7 सेकंड की उस उड़ान ने चंद्रयान को 181.617 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि अभी आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग के जरिए उसी तरह की उन्हीं घटनाओं की याद दिलाई जाए ताकि हम यहाँ से और आगे बढ़ सकें। इस समय हम करीब 11 मिनट की दूरी पर ये एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग आपके लिए, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आपको याद दिला सकें कि कैसा था वो प्रक्षेपण। उसमें क्या था पूरा स्टॉप ही तोड़ बोल बताइए।
थोड़ा ये पैर काट के पड़े सीमा से ऊपर नहीं ऐसे दीजिए है ना कि हाँ सर आज बहुत मेहनत हो पूरी गई। बिल्डिंग में ऊपर तक के कोने तक कोई ऐसे नहीं होगा। मैं तो हैरान होता कि तुम सब of the view of the Mission Control Center at the Mission Operation Complex. इसमें स्टाफ किसी किसी स्कूल का सारा सवाल था। सब कुछ उड़ेगी, कोल्ड ड्रिंक उड़ेगी, पेप्सी पेस्ट्री की पूरी उड़ेगे, समोसे उड़ेगे, रसगुल्ले सारा उनको है। और दरवाजे लग जाओ उन्होंने वो लोग उनसे पूछ के इन सब चीज़ सारा उनके पास है। जाऊँ सर अजय वाली बात है, चलता हूँ सर ना। लाइव होगा ना? हाँ सर लाइव है सर लाइव। लाइव चल रहा है, वो भी चलेगा। आओ बैठ। By 39,000 kilometers around the Earth. So once the orbit of the Chandrayaan 2 was 39,000 kilometers with a perigee of 170, as you can see on your screen, using its propulsion system, it performed 4 earthbound maneuvers to raise the orbital altitudes in preparation to enter the lunar transport trajectory and then go to the lunar orbit. So right now what you're seeing is the orbit of Chandrayaan 2 being raised around the Earth, and once this is done, the spacecraft has entered the lunar transport trajectory phase and it is proceeding towards the moon's orbit, and very shortly you will see the Chandrayaan 2 spacecraft has been captured in the sphere of influence around the moon, and it will start orbiting with an altitude of almost 18,000 kilometers by 120 kilometers, and then subsequently using the propulsion system of the Chandrayaan 2, which is the orbiter module, the orbit was brought down to an altitude of almost 100 kilometers. In the process of bringing it down from 18,000 to 100 kilometers around the moon, it performed nearly 4 orbital descent maneuvers, and you can see now the orbiter and the lander Vikram will get separated, and eventually the Vikram lander module, using its propulsion system, has brought down the altitude to something like 30 kilometers by 100 kilometers. So as I have mentioned repeatedly, the Vikram lander module is presently in an orbit of around 30 kilometers by 100 kilometers. 30 kilometers is the minimum height above the lunar surface where the powered descent operations will be starting. And I think we are very close to the event when the Vikram lander thruster will be initiated. Roughly around 6 minutes to go before we start the power descent operations. जी आप हम करीब करीब 7 मिनट की दूरी पर जहाँ से डिसेंट शुरू होना है, जहाँ से उस घड़ी की शुरुआत होगी जब हम लगभग 35 किलोमीटर की पेरिजी की ऊंचाई से हम उतरना शुरू करेंगे। जिन दर्शकों ने अब इस अभियान को शुरू से फॉलो नहीं किया है, उनकी जानकारी के लिए संक्षेप में बता दूं कि प्रक्षेपण के पश्चात 24, 25, 29 जुलाई और 6-8 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा में 5 मैन्यूवर्स किए गए, जिसमें तकरीबन 508.4 किलोग्राम प्रणोदक का कुल 3604.254 सेकंड तक प्रज्वलित कर कक्षीय परिवर्तन किया गया, जहां कक्षा उत्थान किया गया। इसके पश्चात 13 अगस्त को ट्रांस लूनर इंजेक्शन TLI के दौरान 166.8 किलोग्राम प्रणोदक की खपत कर 158.309 मीटर प्रति सेकंड की वेग वृद्धि की गई और चंद्रयान 2 को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर मिशन के लंबे अतिपर्वणीय पथ पर एक ऐसा बिंदु आता है जो चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र के अंदर होता है। इसे लूनर ऑर्बिटल इंसर्शन
या LOI कहते हैं, और इसी बिंदु पर भू आदेश के द्वारा कक्षा की दिशा में परिवर्तन कर उसे चंद्रमा की दीर्घवृत्तीय कक्षा में पहुंचा दिया जाता है। फिर 20, 21, 28, 30 अगस्त और 1 सितंबर को 745.04 किलोग्राम प्रणोदक को कुल 4422.809 सेकंड तक प्रज्वलित कर चंद्रमा की निम्न कक्षा में प्रवेश करा दिया गया। इस समय पेरिलुइन लगभग 120.5 किलोमीटर और एपोलुइन 126.1 किलोमीटर प्राप्त कर लिया गया है। आप अपने स्क्रीन पर इसरो उपग्रह केंद्र के UR राव उपग्रह केंद्र के विभिन्न वरिष्ठ वैज्ञानिकों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हुए देख पा रहे हैं, क्योंकि इस समय हम केवल 5 सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि लैंड मॉड्यूल निश्चित तौर पे चंद्रमा की सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सभी दर्शकों की जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशन की संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में PSLV रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 1 चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है। यही कारण है कि आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, जो इसरो का दूसरा मून मिशन है, जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LBM-3 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है। मिशन के प्रारंभ में इसकी आयु 1 साल निर्धारित की गई थी, परंतु LBM-3 द्वारा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट की वजह से चंद्रयान 2 काफी लंबे समय तक कार्यरत रहेगा। अब तक चंद्रयान 2 चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेलोड OHRC
यानी कि ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरा विश्व का सबसे बेहतरीन कैमरा है, जो कि चंद्रमा की सतह का लगातार पिक्चर भेज रहा है। अब मैं अनुसी जी से निवेदन करूंगा कि वो आप लोगों को इसरो के वर्तमान मिशन चंद्रयान-3 के बारे में बताएं। अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनार मिशंस का विवरण। अब चलते हैं टुवर्ड्स चंद्रयान। नमस्कार, इसरो के इस महाअभियान से जुड़ने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। मैं पद्मदेव मिश्रा अपने को होस्ट श्रीमती आरुषि सेठ के साथ आप सभी को और देश विदेश से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 23 अगस्त 2023 आज की शाम इसरो के वैज्ञानिकों और सभी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर उतरने के ऐतिहासिक पलों को देखने के लिए तैयार और उत्सुक है। जी हाँ, इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है और आज हम सब लोग इसके साक्षी बनेंगे। आप ये सारे विजुअल्स अपने स्क्रीन पर इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यानी मॉक से देख रहे हैं, जो कि बेंगलुरु में स्थित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्ट्रैक से प्रसारित किया जा रहा है। ये विजुअल्स आपको पावर डिसेंट के काउंटडाउन और उस पथ को प्रदर्शित कर रहा है जिस पे चलकर लैंडर आज चंद्रमा के साउथ पोल पे सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आपको ध्यान दिला दूं, इस समय हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से लगभग 22 मिनट दूर हैं। जो दर्शक थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, आप लोग इस ऐतिहासिक पल को इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। Honorable dignitaries, delegates, scientists, media personnel, and dear viewers, a very good evening to all of you. We at ISRO welcome you to the live coverage of India's prestigious Chandrayaan-3 mission's landing event on the lunar surface. These are the visuals from Mission Operation Complex at ISRO. तुम्हें MBA करना है, मतलब करना ही है। पापा लेकिन विक्स की गोली लो, खिच दूर करूँगा ना, MBA बोले तो मैं बनूंगा एक्टर। अरे मैं आप भी विक्स की तुलसी गोली ले लो, ये बनी है खास औषधिक मिश्रण से। विक्स की गोली खोल दे बोली। We'll be witnessing the final phase of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan-3, wherein the lander module will be making a safe and soft landing on the surface of the moon. These display screens show the countdown to the power descent start as well as the path that will be followed by the lander module. We are 18 minutes away from the commencement of power descent. India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on Moon's south polar region. इसका बच्चे फीस वगैरह का आपको पता लग जाएगा, 50,000 के सामान फीस। नो सर, 22,000 का बताएंगे साल का, 22,000 बताएंगे। जो मेन से बात हो रही थी ना, उन्होंने हमको 22,000 रुपया दे दिया। इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान-1 अक्टूबर 2008 में
धन्यवाद आरुषि। अगर मैं सही मायने में कहूँ तो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, इसरो मिशन की निश्चितता और अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है, जिससे कि एक मिशन सफल या असफल होता है। लेकिन ना हम थके ना हम हारे। हमने पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि लैंडर मॉड्यूल निश्चित तौर पे चंद्रमा की सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सभी दर्शकों की जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशंस को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है। यही कारण है कि आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, जो इसरो का दूसरा मिशन है, जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है। मिशन के प्रारंभ में इसकी आयु 1 साल निर्धारित की गई थी, परंतु LVM-3 द्वारा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट की वजह से चंद्रयान 2 काफी लंबे समय तक कार्यरत रहेगा। अब तक चंद्रयान 2 चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेलोड OHRC यानी कि ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा विश्व का सबसे बेहतरीन कैमरा है, जो कि चंद्रमा की सतह का लगातार पिक्चर भेज रहा है। अब मैं आरुषि जी से निवेदन करूंगा कि वो आप लोगों को इसरो के वर्तमान मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बताएं। अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनार मिशंस का विवरण। अब चलते हैं towards Chandrayaan 3, the follow-up mission of Chandrayaan 2, which has been designed to accomplish our mission goals. The primary objective of Chandrayaan 3 mission is the demonstration of safe and soft landing on the lunar surface. This demonstration is a critical aspect for ISRO's future interplanetary missions. In addition to this, the mission objectives also include demonstration of roving capability and conduction of in situ scientific experiments on Moon's surface. Carried on the shoulders of India's heaviest rocket LVM-3 on the 14th of July, Chandrayaan 3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36,500. The fifth apogee raising maneuver, which took place on the 25th of July, placed the spacecraft in an orbit of 250 by 1,27,000 kilometers. At the early hours of 1st August, the translunar injection was carried out, after which the composite module began the final leg of its long journey of nearly 3,84,000 kilometers for its rendezvous with the Moon. The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the Moon. An orbit of 288 by 3,69,328 kilometers was achieved at the end of the translunar injection. जी हाँ, ट्रांसलूनर इंजेक्शन किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए बहुत ही आवश्यक परंतु कठिन ऑपरेशन होता है। इस सफल मैन्यूवर के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर निकलकर चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी के द्वारा पहुंचाया गया। पुनः 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के द्वारा चंद्रयान 3 को 160 किलोमीटर के पेरिलोन और 18,000 किलोमीटर के अपोलोन के साथ चंद्रमा के इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। TLI की तरह LOI भी एक बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। इसमें हमें यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि उपग्रह के वेगमान को एक निश्चित बिंदु से घटाया जा सके, अन्यथा उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र से
बाहर निकल जाएगा। LOI के सफलतापूर्वक परिचालन के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा को 4 बार और परिवर्तित किया गया। इस दौरान चंद्रमा की अधिकतम ऊंचाई को घटाकर 160 किलोमीटर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में प्रपल्सन मॉड्यूल का लगभग 755 किलोग्राम ईंधन का उपयोग हुआ और चंद्रयान 3 के वेगमान को लगभग 850 मीटर प्रति सेकंड कम कर दिया गया। लैंडर मॉड्यूल को लगभग 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस्त 2023 को प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। पुनः लैंडर मॉड्यूल के ऑर्बिट को 2 ड्यूस्ट मैन्यूवर्स के द्वारा 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर 25 × 130 किलोमीटर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रटेबल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सब सिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूवर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। That is true indeed. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan 3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan 3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full-level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test, and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system, and associated guidance, control, and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2, the Chandrayaan 3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan 3 mission. अच्छे से मैं तो सारी भेज दूँगा आपको, वीडियो सारी भेज दूँगा मैं। तो यहाँ पे सारी इतनी अच्छे से मतलब जो है ना प्रॉपर है मतलब जो इसकी क्या जिसका मतलब जाता है वो क्या करना है अभी सब मतलब आपसे वो करना रहेगा ना। चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग चंद्रयान 2 की तरह ही बनाया गया है। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा की निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियाँ चंद्रयान 2 की तरह ही हों। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स
और प्रोपल्सन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, LHPC, LDV और LH-टैग का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। LDV, जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराव यानी लेजर इनर्शियल रेफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन, जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन, जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफी ऊंचे स्तर का डैम्प प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट की सीमा को बढ़ाकर 4 × 2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा। Apart from the sensors, Chandrayaan 3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. While Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided abundant remote sensing data of Moon, equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe CHAST will measure the temperature profile and thermal conductivity of Moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies, while the laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind, and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of powered descent. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगेगा और इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSN-32 located in Belalu, Bengaluru. The data is being acquired real-time by station and is flown to the Mission Operation Complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into 4 phases.
the rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ, एटीट्यूड होल्ड फेज जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के दो महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूप में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क आइडिएशन 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडर लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा। इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग 0 हो जाएगी। The scientists here at his track are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the power descent, to the start of the power descent phase. जी हाँ, अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हवरिंग करेगा। आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी मान्यगणों को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आइडिएशन 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. जी हाँ, आप देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। अब ये भी सोचिए हम पहली बार कैसे पहुंचे हैं। During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking.
All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. ROCC अभी हम इस ग्राउंड रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करेंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले।
The lander imager is continuously taking photographs of the moon's surface, and that is also being streamed here. Currently, the horizontal velocity has been brought down, and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers, as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers, and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer, and there is no intervention from ground. जी
जी हाँ रुचि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा की सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेज ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग फेज के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, गाड़ियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट
लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. अच्छा लग जाएगा तो फिर हम वापस कर जाएंगे ऑनलाइन कर जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। मेरा क्लासमेट इसके साथ में मतलब कि साइंटिस्ट है। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकेंड हाइवरिंग फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने
ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को माँ कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था
चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है, स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को
बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Aditya Pradhan Mantri ji, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3 is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankaran, the director. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations, right from launch till landing, happened flawlessly as per the timeline, and we became the fourth country to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as mission director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly, and I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team, and of course with the guidance from our Chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years.
So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan 3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that, it is as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less than nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for few years, and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you. A big thank you, because even casual remark, an unintended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very welcome, and we are very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful. In fact, I was not that much confident, because we have seen a couple of times issues. Because I know very well, as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail. But so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone for your love and affection. We will continue to
do our best and make our flag fly. ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family for the wonderful work you did in ISRO. Thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. इसका नहीं होता है ये समझ नहीं होता और लोगों ने मना कर दिया कि हमारे पास तो नहीं है सीरियसली सर उसके बाद मैं खाली क्यों नहीं वरुण ये सीबीएसई के जो बच्चों मार्क्स आते हैं जैसे 12th के बच्चे मार्क्स आए हैं उनके माइग्रेशन साथ में आते हैं क्या नहीं आते साथ में आते हैं ना ओके भाई एक बच्ची आई हुई है वो 12th की मार्क्स तो ले रही है लेकिन उसके बाद माइग्रेशन नहीं है वो आपका मार्क्स होगा क्या हाँ हाँ अच्छा
11th 12th में बच्चों को पता ही होता है कि मतलब माइग्रेशन होता है क्या है। हाँ बेटा वही बात है, सरकारी में पढ़ लो प्राइवेट में पढ़ लो बेटा, यही तो फर्क है, थोड़ा बहुत तो देखो फर्क तो है ना इस चीज़ का। क्यों जी? जी हैं? जी अभी हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे ये। जी। और अब आप बेटा एक काम करो, इसमें ना अपनी जो आपकी जो मार्कशीट है ना, जो इनके सब का फ़ोटो भी ले लो। कई बार वो रोल नंबर आपको याद है, रोल नंबर याद है 12th क्लास का? तो रोल नंबर पूछेंगे बस वो वहाँ। ये तो आप अपना पहले तो इसका फ़ोटो लो एक बढ़िया साफ सा। इसमें ले लेना। अब इसका लो ताकि आप, ये आपकी 12th क्लास की है, ठीक है? लो। अच्छा सर, एक 10वीं का एक 12th वाला लगा है। हाँ, ये लो। और इसकी रिक्वायरमेंट वैसे उनको नहीं होगी, मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट वही फ़ोटो ले ले अपने, मतलब तेरे पास होना चाहिए कम से कम ये। और अगर उन्होंने मुझे ओरिजिनल मांग लिया? ओरिजिनल नहीं मांगते बेटा, उनको सिर्फ रोल नंबर चाहिए। बेटा आप रोल नंबर बताओ, रोल नंबर क्या है? स्कूल में जाओगे ना तो आप रोल नंबर बताना, और मेरा ये रोल नंबर था, मुझे वो चाहिए माइग्रेशन। ठीक है। और अगर नहीं मिला तो? बेटा वो अपने आप बताएंगे, नहीं मिला था। ऐसा थोड़ा होता है कि नहीं मिलना। ये तो हर बच्चा, ये तो आगे जो बच्चा पढ़ता है वो हर बच्चे के लिए रिक्वायर होता है, हर बच्चे के लिए। ऐसा थोड़ा होता है कि नहीं मिला, ये क्या मतलब हुआ नहीं मिला?
उनको स्कूल वालों को बताओगे ना जाके कि मुझे जी मतलब ये चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोसेस अपने आप बता देंगे ये। जो भी उनका बोल लेंगे कि आपको 200 रुपये जमा करने हैं, 400 रुपये जमा करने हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना क्या है क्या, सब अपने आप बता देंगे ये। उससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकती आपके लिए ना। ये तो हर बच्चे के लिए, जो बच्चा आगे पढ़ता है, डिग्री में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है आगे पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। ये बताइए कि स्टैंड पे जाए, जहाँ है वहाँ जाए या रेलवे स्टेशन जाए? अभी आप किसी गाड़ी से आ रहे हो क्या? जी, रिजर्व करके आए वहाँ से 200 रुपये लिया आने का, 200 इधर से जाने का। कहाँ से? वो पानी सोनीपत से। सोनीपत से? जी। सोनीपत से 200 रुपये? जी। कौन सी गाड़ी है? बैटरी वाला। ई रिक्शा। रिक्शा। अभी आपको जाना है दिल्ली? हाँ, वहीं पे बस अड्डा जाएंगे ना सोनीपत। बस अड्डे की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वो तो आपको हाईवे पे मुरथल छोड़ देगा उसके नीचे उधर ना। रेलवे स्टेशन हम 6 बजे ट्रेन थी गई, अब तो ट्रेन नहीं होगी, अब तो लेट होगी ट्रेन। तो ट्रेन जाती 4 बजे, ट्रेन जाती 6 बजे। उसके बाद अब तो बस लेनी पड़ेगी। और मैं एक बार पूछ भी लेता हूँ ट्रेन का ना स्त्री से। एक बार वो जो रिक्शा वाला है कोई, बुलाइए एक बार। ऑनलाइन पे करूँगी। ऑनलाइन है बेटा, वहाँ बैंक में जाना पड़ेगा आपको, बैंक में जाकर जमा करनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन कैसे करोगी? ऑनलाइन तो आप लोगों के पास काम ही नहीं। आप ऑनलाइन तो आप मतलब आप राधे एक अच्छा ट्रेन तो निकल गया या गई ट्रेन? अब देखो या गई ट्रेन, ये ट्रेन यहाँ से मतलब 40 मिनट में नई दिल्ली पहुँच जाती है। बेटा बच्चे आते हैं ट्रेन से हैं, बहुत मतलब दिल्ली से बच्चे आते हैं ट्रेन से हैं, बहुत बच्चे आते हैं ट्रेन से। ये तो चलिए सर, वो भी वेट कर लिया है ना इतना देर, मांगेगा पूरा पैसा वो। कौन? वही रिक्शा वाला। पहले ही उसने ठीक ठाक ले रखा है, रिक्शा वाला क्या करेगा? 200 रुपये कम होता है क्या? आने का लिया है, जाने का भी 200 लेगा, 400 लेगा। हाँ चलिए। मम्मी। बेटा नोट कर लिया ना फोटो? हाँ। फोटो कम से कम 5 फोटो, और जो अकाउंट नंबर दिया इसी इसमें फीस सबमिट कर देना। ठीक है, इसमें नंबर डालना कि ये नंबर आपका स्टूडेंट नंबर, ये फादर नंबर है, यही है ना? हाँ। और मम्मा कौन सा है? मम्मी का पास फ़ोन नहीं है। हैं? मम्मी के पास फ़ोन नहीं है। तो आप ये किसका फ़ोन ले रहे हो? पापा का। एक तो इसके पास रहेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और जो मैंने जो दिया ना आपको अकाउंट नंबर लिख के, उसका फ़ोटो खींच के मोबाइल में रख लो। कागज वाग से गुम हो जाता है, मोबाइल में आजकल होता है ना चीज़ें पड़ी हुई ना, पर्स में से नहीं होता इनका गायब। मैं कोई भी सामान रखता हूँ तो नहीं, वो थोड़ी सी वो यादाश्त के लिए ठीक होता है उसमें ना, मोबाइल में वगैरह। फ़ोन भी रीसेट हो जाता है, पता है आपको? इन लोगों को जो है ना, इन लोगों को दिल्ली जाना है, तो यहाँ मुरथल छोड़ दूँगा इनको मुरथल जो है ना फ्लाईओवर के नीचे, छोड़। वहाँ की सारी बसें रुकती हैं, इनका टाइम बच जाएगा। और वहाँ से तो हर 2 मिनट की सर्विस है। हाँ वही तो मैं भी अभी यही सोच रहा था। वहाँ किसी बस में बैठेंगे बसें बंद हो गई हैं, तो 6 बजे के बाद बस नहीं मिलती सोनीपत से। और हाईवे पे तो किसी भी टाइम मतलब बिल्कुल वहाँ हर 5 मिनट की सर्विस है। वो तो साबित रात चलती है। हाँ हाँ, थोड़ा सा गाइड करते ना दिल्ली नहीं बिल्कुल उठाने का बिठा ना। दूँ और बताओ। हाँ, तो नए बंदे होते हैं बाहर, थोड़ा सा नहीं वहाँ बैठा दूँगा मैं इनको। तो ये जो फोटोज और वो जो है उसको हम कभी भी लेके आ सकते हैं? ये कभी भी हाँ बेटा, जब तेरा मन करे आ जाना, जब मन करेगा, जब कैसे जब तेरा मन करे आ जाना, कोई बात नहीं। क्या दिमाग ही नहीं है। मैडम क्यों नहीं दिमाग नहीं है? आप जो है ना, आप इसको इतना ज़्यादा वो मत समझो। ये आपका नाम ये रोशन करके दिखाऊंगा मैं आपको, यही
अब मतलब कुछ दिन के बाद आप बोलोगे जा बेटी जा कॉलेज में जाइए चीज़ दे के आई हूँ, ये आ जाना कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा जो है ना हमको रोना आ रहा है अब वो जिस लड़की से मैंने बात कराई थी साजदा, कहाँ की है वो? भजनपुरा की लड़की है वो, मुस्लिम है वो भी है, वो इतना अच्छे से मतलब इतना अच्छे से पढ़ रही है वो हैं। तो ये तो आप ऐसा इसको बात ऐसा ही है, ज़्यादा मोहब्बत करने के कारण भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। हाँ, मेरा नाम आपको मैंने कार्ड दे दिया, मेरे को जो है ना पैसा जमा करके मुझे एक बार फ़ोन कर देना, और मुझे उसका जो रसीद है ना मुझे व्हाट्सएप भी कर देना इस नंबर पे, ताकि मैं सिस्टम चढ़वा दूँगा फिर मैं। और बेटा ये सर मेरा नंबर कार्ड है, कभी कोई बात करनी है, कोई डॉक्यूमेंट कोई भूल जाए, फ़ोटो माइग्रेशन, ठीक है? क्या ऐसे अरे मतलब आप ये लगाओ कि मतलब ये इसको मतलब हमारी बेटी जैसे होती है ना, ऐसे मतलब वो चीज़ दिमाग से निकाल देना बिल्कुल। आप बिल्कुल इतना खुश रहना, और ये इतनी खुश रहेगी यहाँ पे, आप देखना। Greetings everyone. Today I, Ravi of grade 11th of Puran Murti Campus is here to represent some lines on Chandrayaan 3. After Chandrayaan 2, which detected water on Moon, India had now launched a new major project of Chandrayaan 3. Moon, which is 3,48,000 kilometers away from the Earth. Its southern pole is not discovered yet. India will become the first country to discover Moon South Pole. The launching of the Chandrayaan 3 was done on 14th of July 2023 at 2:35 p.m. The Chandrayaan 3 consists of two major components, which were Vikram and rover. Vikram was the lander part, which is going to be land on the moon, and the rover is the part which will provide information and data such as photos of the moon. The Chandrayaan 3 will be land on the moon on 23 of August 2023 at around 6 p.m. If it will not land, if it face any problem on landing on 23 of August, then it will land on 27th of August on the place which is 400 kilometers away from the place where it is going to be land today. We, the students of Puran Murti Global School, pray for the success of the Indian scientists and the successful landing of the Chandrayaan 3 on the moon. Thank you and have a nice day. Greetings everyone. Greetings all of you. Today I am a part of grade 8th in Puran Murti Global School. Today I here to pray with you for the soft landing of Chandrayaan 3 on the southern part. Greetings all of Greetings everyone. Today I am a part of grade 8th in Puran Murti Global School. Today I am here to pray with you for the soft landing of Chandrayaan 3 on the southern part of the moon. Chandrayaan 3 is lunar exploration mission planned by the ISRO, Indian Space Research Organization. Chandrayaan 3 was launched on 14 July at 2:35 p.m. and its landing is supposed around 6 p.m. The CEO of Chandrayaan 3 is S. Somnath. Like Chandrayaan 3, Chandrayaan 2 was also launched, but its signal is lost, so it was also failed. So thank to S. Somnath to conduct the Chandrayaan 3. Thank you. Have a nice day. नमस्कार, मेरा नाम वेदांश है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैं यहाँ आप सबको कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम वेदांश है। मैं पुरान
पुरन मूर्ति ग्लोबल स्कूल में कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैं यहाँ पर आज आप सबको कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ जो कि चंद्रयान 3 के बारे में है। ये Greetings everyone, I am Bhumi of class 8th of Puran Murti Global School. Today I present here to play the board for the soft landing of Chandrayaan 3 on moon. The Chandrayaan 3 will land on the moon on its southern part. The Chandrayaan 3 cost is approx 615 crore. Greetings everyone. नमस्कार, मैं पारुल पुरन मूर्ति ग्लोबल स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा आज आपके सामने चंद्रयान 3 के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक कामना के लिए आज हम Greetings everyone, today I, Kushi, student of class 11th of Puran Murti Global School, will inform you about Chandrayaan 3. The Chandrayaan 3 Greetings everyone, today I Greetings everyone. Today I, Ravi of grade 11th of Puran Murti Global School is here to represent some lines on Chandrayaan 3. After
And today I, Khushi, student of नमस्कार, मैं पारुल पुरन मूर्ति ग्लोबल जी अच्छा अभी वो उस बार नया सॉफ्टवेयर है ना, तो हम ही देख पाएंगे कि बच्चे का रोल करके हाँ बच्चे को नहीं देख सकते। हाँ तो इसको देखिएगा रात को फिर अभी कई बार उसी के पास आईडी पासवर्ड होगा। ओके ओके एक फर्स्ट बच्चे का भेजा था मैंने बस। हाँ ये क्या है वो वैसे तो हाँ अच्छा कौन सा फाइनल ईयर वालों का? अच्छा दोनों का आ गया तो मतलब वो हम अपने लोग इसे देख सकते हैं खाली बस हैं। ओके तो उसको फिर बोलना पड़ेगा भाई चेक कर ले सारे हैं। हाँ ओके तो चंद्रयान पहुंच गया। अच्छा कुमार दे देंगे हैं? ना ना मैं तो ऑफिस में हूँ। हाँ ना ना बनवाए नहीं। अकेले में फिर थोड़ा ऐसा ही है हमारा अकेले में ज़्यादा। हाँ हाँ ना ना निकल जाएगा। सुबह 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 मॉर्निंग में। हेलो हाँ बर्थडे चक्कर में। हाँ बर्थडे चक्कर में गया। कर लूँगा एक बार।
हैं? हाँ कहीं रुके हुए यही पाऊँ कहीं ना कहीं फिर यही पाऊँगे। हाँ एक बार हाँ हाँ फिर कर लेंगे। हैं? हाँ कंफर्म हो तो हाँ वो कंफर्म ही है। हाँ एक को अंगद है उसकी रुकवाई मैं इसको थोड़ा रोक एक बार। हैं? उसका मेरे को कल कुलदीप ने बताई कोई लड़की के साथ वो मतलब कुछ गलत मतलब लड़की को परेशान कर रहा है लड़की को साजदा को। हाँ कुलदीप ने मुझे कुलदीप का कल रात को फ़ोन आया था मेरे पास। वो लड़की आके रो रही थी तो मगर इसको मगर इंस्पेक्शन होने उसके बाद बात करेंगे इसलिए मगर ज़्यादा बोलना ठीक है ना है। हाँ हैं? हाँ ITI के अभी 2 दिन पहले करवाई थी। हैं? पता नहीं अभी 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 3-4 दिन पहले करवाई थी कुछ और दिन पहले भी क्या था पता नहीं। अच्छा कोई बात नहीं होगा। हाँ मैं अभी वो YouTube पे जो स्कूल के कुछ बच्चों के कुछ चंद्रयान के उसमें थे वो अपलोड कर रहा हूँ इस पर YouTube पे वीडियो वगैरह। कोई बात नहीं तो फिर क्या बोला मत करो कुछ मतलब जो है ना बोला मत करो कुछ भी बस बता दिया आपने। हाँ मतलब एक आधी बार पर अवॉइड करा बोलना सीधा मतलब यही है। अपने आप फिर अपने आप जो है समझ में आ जाए हैं। हाँ हाँ ठीक है।
Greetings everyone. Today I, Ravi of grade 11th of Puran Murti Global School is here. हाँ पिंटू हैं सोनीपत से सर गांव की तरफ भी जाना था मेरे को, लेट हो रहा हूँ। क्या लेके जाना था? सोनीपत से सर गांव भी तो जाना था, सामान लेके। अभी करता हूँ मैं, एक बार देखता हूँ 5 मिनट करवा दो।
ठंडा हो गया अच्छा रंगार वो तो टाइम हो रहा है इतना तो क्या है अच्छा वो नहीं करता वो मैंने ट्रांसफर कर दिया एक बार अकाउंट मैसेज देखना देख लीजिए अगर आएगा ठीक है चल दिया चल दिया चल दिया आपको भी बहुत सारी और बच्चे को भी अच्छी देख के वीडियो मैसेज लिखेगा भाई मैसेज लिखेगा फिर हमारे जवाब में वीडियो भी अच्छा ऐसी ऐसी चीजें तो चाहिए जब हम कई बोल रखी है ऐसे वीडियो कई हैं तो डाल दो ना जरिए डालते हैं उसमें और जरिए वही है ना कि पूरा सिस्टम था जितना लैपटॉप वगैरह में फोन वगैरह ये चीजें वगैरह काम होने वाली है ना बच्चों की एक्टिविटी वगैरह ये सब बहुत चल रहा है 8 बजे क्या है सुबह जब एक्सपेक्ट कर रहा है 8 बजे क्या दूध की बोतल देखो नाश्ते में बढ़िया बापू के लगा दूध क्या चीज है आशीर्वाद है चल रहा है सिस्टम ऑफिस वैसे अक्सर राजगा भी वीडियो फोटो डाल रहे हो ना मेरे को भाई वीडियो बनाई उसकी ग्रुप के लिए फोटो वोटो अच्छा नहीं वीडियो वगैरह बीच में तो डालना पासपोर्ट हेलो अभी एडिटिंग वाला गाइस है फ्लोटिंग ये इतना है वो फोटो देखिए काटते होगी बहुत अच्छी बहुत बढ़िया अच्छी एक्चुअली को बहुत खुशी ही मिली है मतलब अच्छा लग रहा था अभी वहाँ पे को टैटू का चल रहा है बिजी थे थोड़ा ना उसको थोड़ा बढ़िया हुआ आपके सारा वो इकट्ठा हो गया ना तो ऊपर करिए एक्शन नहीं रही है तो इसमें सारा स्टाफ बिजी है इसलिए मैंने मतलब वही किसी को भी कोई अपनी सीट से लीजिए ना सुरेश मैडम अभी आप अपना काम करो और मेरे सेवा का होल कर और मैं से मैंने फ्री डिवाइड ऑफ द स्पॉट फ्री होते पर आप इसको डाउनलोड कर बैक कर दो जो सी सीट है उसका वही को जाऊंगा और भी लेगा वही को जाऊँ ताकि हमारा काम में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और सिस्टम में तबीयत तो रेडी करने का इकट्ठे करके पूरा वाईफाई सेलिब्रेट करने का ना बस वो था ही नहीं मौका से कल बैठे तो कुछ कह रहे थे और अपना मोड़ तो बढ़ा दिया इंशाल्लाह कोई बात नहीं अरे ठीक है साहब पूरा गाड़ी भर के दे रहे हो और ये कहाँ है खाने देंगे स्ट्रक्चर वाला कर करके कोई तरफ की और के तो टोकरा पांडे जी के लिए और आपके लिए और यूजर को पता है आप देखिए मतलब ये फ्री कंपनी मतलब कौन अर्जी नहीं है तो चार मतलब आप लोग टोकरा खाएंगे खा लेंगे मतलब ले जो ये क्या हो रहा है आप सब अपने बच्चे सही है ठीक था स्कूल
हाँ हाँ करा काम है। ठीक तो क्या किसना है? ओके। भाटिया जी कहते बोले डॉक्टर साहब को अकेला छोड़ दिया, अब निकल गया। ठीक मगा भाटिया जी वहाँ जाना था थोड़ा दिन में था, फिर मगा वो भी नहीं, वो भी परिवार है, संस्था भी, एक फैमिली है, इनके साथ भी ईबून का वहाँ जाने के बाद फोन आओ बिना मनीषा मेरा होता, मैं रुक जाता। कौन क्या है? भाटिया जी मगा आप इनका नंबर बना लो। अच्छा यूँ कह रहे हैं क्या? हाँ अरे नहीं, जब क्यों, उनको तो पहले पता है कि कुलदीप तो दिन में जाने वाला था, पर इंस्पेक्शन थी भाई, मैं छोड़ नहीं सकता। मेरे को तो पता काम पहले, ठीक है, पहले इंस्पेक्शन वगैरह जब कैंसिल होगी, जो मना नहीं करने का बोले, अगर इंस्पेक्शन रहती चल रात के 8 बजे थे, मैं वहीं रहता। सबको पता है इस बात का। हम मगा ले, कोई बात मत मगा, तुम ऐश करो जाओ मगा। और नहीं भाई, मैं और बताओ, अरे रुक चल, रात नहीं करके बताओ, रात में पहुंच जाऊंगा आप तो। और ना 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 मैं तो निकलूँ बस तो फिर ऐश करो। ठीक है, एक बार लगा कर भेज सकता हूँ आपके पास। ठीक है ओके। ठीक है। कलाकार जो हमारे बीच नहीं रहे, जिस चीज़ का यकीन ना आप सबको है, ना हमको है, ना परिवार को है, किसी को भी नहीं है। और ऐसी आत्मा मेरे ख्याल से युगों युगों तक दोबारा नहीं आती। Greetings all of you. Today I Anu, a part of grade 8th in Puran Murti Global School. Today I here to pray with you for Greetings everyone. Today I Kushi, student of class 11th of Puran Murti Global School. Greetings everyone. Today I
संभव नहीं था। 47 अंतरिक्ष मिशन श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 सालों में लॉन्च किए हैं। My first thought is congratulations India, hail India on moon, hail ISRO। और मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जिस चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है, आज हमने उस चांद को छू करके महसूस किया है। While the world fantasizes the moon, we have today actually felt the moon। और जिस चांदनी की हसरत की ख्वाब सारी दुनिया देखती है, आज हमने उस हसरत के ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देखा है। अगस्त में चंद्र क्रांति की ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हैं। इसी अगस्त महीने में 15 अगस्त 47 को देश आजाद होता है। 15 अगस्त 1969 को इसरो बनता है और आज 23 अगस्त का वो मौका जब दुनिया भर को पीछे छोड़कर हिंदुस्तान ने रच दिया है इतिहास। और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अपना संबोधन दिया और उसके तुरंत बाद इसरो चीफ को फोन लगाकर किस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त की, सुनते हैं। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। तो चीफ से फोन पर बातचीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। और आपको बताते चले, जोहानिसबर्ग से लौटते ही बेंगलुरु जाकर अपने तमाम वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। जो युवा हमारे साथ मौजूद है अपनी बात करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी बताइए क्या सुनाएंगे। मेरे भारत ने इतिहास रचा है। मैं इस खुशी में 2 पंक्तियां गाना चाहूंगी। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। वी प्राउड ऑफ यू इसरो। क्या बात है, आज आप क्या सुनाने चाहते हैं? मैम मैं ये बोलना चाहूंगी, मैम जैसा कि हम जानते हैं आज से ठीक 8 दिन पहले हमने लाल किले पर तिरंगा फहराया था और आज चांद पर फहरा दिया है। तो इसी पर मैं अपने शहीदों को याद करते हुए 4 लाइन बोलना चाहूंगी कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन जैसा खूबसूरत सरम नहीं होगा। नोटों में लिपट कर सोने में समेट कर मरे हैं कई, पर तिरंगे जैसा खूबसूरत कफन नहीं होगा। यकीनन मैं बस इतनी बात बोलना चाहती हूँ, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। और अब तो हमारी सोने की चिड़िया चांद पे भी पहुँच गई। क्या बात है, यकीनन। मैं इशिका हम तान है, 3 रंगों से रंगा तिरंगा, यही हमारी पहचान है। ठीक है। आप मैं विभा सिंह आपसे ये कहना चाहूंगी, बस मैं आ रही हूँ अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है, वो सुन लेते हैं, फिर आपकी भी बात सुनिए। चांद की सतह पर चंद्रयान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। भारत ने जो इतिहास रचा है उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। किस तरीके से ऐतिहासिक पल देश के लिए? बहुत ही ऐतिहासिक पल है। देश की संकल्प शक्ति चांद पर तिरंगा फहराने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
चांद पर तिरंगा फहराने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इसी बात पे एक गाना जो है अक्सर जो है गुनगुनाया जाता है, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। चांद पर तिरंगा फहराने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इसी बात पे एक गाना जो है अक्सर जो है गुनगुनाया जाता है, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। भारत का मान, भारत का तिरंगा चांद पर जो है ना फहराने के लिए, और जो कहावत है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने उसको सच किया है, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। तो उन्होंने अपना सब कुछ दिन रात न्यौछावर करके इसके पीछे जो जितनी एफर्ट उन्होंने लगाई है वो बहुत ही काबिल तारीफ़, और पूरे देश का एक मान सम्मान बढ़ाने के लिए उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और इस चीज़ के लिए ये देश का युवा उन सब का ऋणी रहेगा, यही मैं सबसे आशा करता हूँ। और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। भारत का मान, भारत का तिरंगा चांद पर जो है ना फहराने के लिए, और जो कहावत है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने उसको सच किया है, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। तो उन्होंने अपना सब कुछ दिन रात न्यौछावर करके इसके पीछे जो जितनी एफर्ट उन्होंने लगाई है वो बहुत ही काबिल तारीफ़, और पूरे देश का एक मान सम्मान बढ़ाने के लिए उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और इस चीज़ के लिए ये देश का युवा उन सब का ऋणी रहेगा, यही मैं सबसे आशा करता हूँ। और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। देश का मान सम्मान हमारा तिरंगा आज चांद पे फहराने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और इससे एक देश के युवा को एक नई डायरेक्शन मिलेगी, इस देश को एक नई डायरेक्शन मिलेगी। और ये युवा जो है इस तकनीक के बारे में जानने की भी पूरी कोशिश करेगा, और वो इस तरफ इसका रुझान भी बढ़ेगा बच्चों में। और जो कहावत है दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, वो एक इसरो के हमारे वैज्ञानिकों ने अपना दिन रात लगा के जो पूरी एक मेहनत के साथ ये कारनामा कर दिखाया है, और पूरी दुनिया में भारत का नाम, भारत का मान, भारत का सम्मान बहुत आगे कर दिया है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ।
30 है। तस्वीरों में देखिए क्या उसमें आज तक खाना भी मैं ख्याल में नहीं खाया ना मैंने। तीस एक बार यह लाइट ही बंद करिए ये हमारी भी। आज तो मैं लंच भी नहीं करा मैंने। एक बार यह लाइट बंद करिए। और भी करें एक बार लाइट बंद है। देखिए वो कौन सी या और या कर बंद एक बार। हाँ या वहाँ से होगी शायद। उसने उस बंद कर दे उसको बंद कर एक बार। पहले वीडियो बना रहा है। बस बस उसको बंद कर दे। हाँ इतना ये ठीक है। देश का मान सम्मान हमारा तिरंगा आज चांद पे फहराने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इससे एक देश के युवा को एक नई डायरेक्शन मिलेगी, इस देश को एक नई डायरेक्शन मिलेगी। और ये युवा जो है इस तकनीक के बारे में जानने की भी पूरी कोशिश करेगा और वो इस तरफ इसका रुझान भी बढ़ेगा बच्चों में। और जिस जो कहावत है दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, वो एक इसरो के हमारे वैज्ञानिकों ने अपना दिन रात लगा के जो पूरी एक मेहनत के साथ ये कारनामा कर दिखाया है और पूरी दुनिया में भारत का नाम, भारत का मान, भारत का सम्मान बहुत आगे कर दिया है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने भारत का मान सम्मान जो कि हमारा तिरंगा चांद पर फहरा दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से। तो ये हमारे जो इसरो के वैज्ञानिक हैं ये बहुत ही मतलब बधाई के पात्र हैं। इसका मान सम्मान हमारा तिरंगा आज चांद पे फहराने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इससे एक देश के युवा को एक नई डायरेक्शन मिलेगी, इस देश को एक नई डायरेक्शन मिलेगी। देश का
देश का मान और सम्मान जो कि हमारा तिरंगा आज हमारे इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा चांद पर फहराने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इससे देश को एक नई दिशा मिलेगी, जिससे कि एक देश एक नई डायरेक्शन में जाएगा और अपने विश्व के पटल पर संसार में भी हमारा मान और सम्मान भारत का तिरंगा आज इसरो के वैज्ञानिकों ने जो चांद पर फहराया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। इससे एक देश को एक नई डायरेक्शन मिलेगी और देश के युवा जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको भी एक इस दिशा में सोचने का एक अवसर इन्होंने जो दिया है सोचने के लिए कि कुछ आने वाली नई जनरेशन भी हमारा कुछ ऐसा कर सकती है। कोई भी बड़ा काम होता है तो युवा, जो देश का जो युवा है उस पर बहुत इफ़ेक्ट डालती है, और वही हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने किया है। और जो एक कहावत है, दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए, इसरो के वैज्ञानिकों ने वही किया है। अपना दिन और रात, तन और मन, धन, हर चीज़ लगा के इस देश को उतना आगे ले जाने की कोशिश की है, जो कि आज हर भारतीय का सिर बहुत गर्व से ऊंचा पूरे संसार में। आज भारत का मान सम्मान बहुत ही कहते हैं ना कि मज़ा आ गया। बस हमारे इसरो के वैज्ञानिक और आने वाली हमारी युवा पीढ़ी हमारे देश का मान सम्मान ऐसे ही बढ़ाती रहे। बस हम यही आशा करते हैं, यही उम्मीद करते हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मान और सम्मान भारत का तिरंगा आज इसरो के वैज्ञानिकों ने जो चांद पर फहराया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। इससे एक देश को एक नई डायरेक्शन मिलेगी और देश के युवा जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको भी एक इस दिशा में सोचने का एक अवसर इन्होंने जो दिया है सोचने के लिए कि कुछ आने वाली नई जनरेशन भी हमारा कुछ ऐसा कर सकती है। कोई भी बड़ा काम होता है तो युवा, जो देश का जो युवा है उस पर बहुत इफेक्ट डालती है, और वही हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने किया है। और जो एक कहावत है, दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए, इसरो के वैज्ञानिकों ने वही किया है। अपना दिन और रात, तन और मन, धन, हर चीज़ लगा के इस देश को उतना आगे ले जाने की कोशिश की है, जो कि आज हर भारतीय का सिर बहुत गर्व से ऊंचा पूरे संसार में। आज भारत का मान सम्मान बहुत ही कहते हैं ना कि मज़ा आ गया। बस हमारे इसरो के वैज्ञानिक और आने वाली हमारी युवा पीढ़ी हमारे देश का मान सम्मान ऐसे ही बढ़ाती रहे। बस हम यही आशा करते हैं, यही उम्मीद करते हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देश का मान सम्मान हमारा तिरंगा आज जो इसरो के वैज्ञानिकों ने हमारे चांद पे फहराया है बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से।
हेलो एवरीवन। आज हमारे देश का मान और सम्मान जो कि हमारा तिरंगा, हमारे वैज्ञानिकों ने, इसरो के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो चाँद पर जो हमारा जो तिरंगा इतनी सफलतापूर्वक, इतने बेहतरीन तरीके से जो चाँद पे जो तिरंगा फहराया है, एक देश की आन बान शान, उन सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक इतना बड़ा काम, इससे देश को नई डायरेक्शन, देश के युवा को नई सोच देने का काम करेगी, मेरा ये मानना है। जैसे कि क्रिकेट को पहले कौन जानता था? कपिल देव जी ने जो पहला वर्ल्ड कप जीता 1983 में, उसके बाद क्रिकेट बढ़ा इंडिया में आगे और देश का युवा जानने लगा कि ये भी कोई गेम है। तो ऐसे ही अलग अलग हम गेमों की बात करें तो जो भी कोई बड़ा काम होता है गेम में करें या फिर हमारे साइंटिस्टों ने किया है, तो इसी तरीके से ये युवा आगे ज़रूर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है युवा पे। और जो हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, इसका आने वाली हमारी जनरेशन पे इतना पॉजिटिव इफ़ेक्ट आने वाले 20 साल में देखना कि हमारे युवा, जो हमारे युवा वैज्ञानिक होंगे, जो आज बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आने वाले कुछ टाइम वो वैज्ञानिक भी बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, बहुत टॉप लेवल पे जाएंगे और इस देश का नाम, ये तो एक चाल जो है, एक चलन बन गया है अब, जो कि एक इसरो के हमारे वैज्ञानिकों ने दिया है आने वाली युवा को। कहते हैं ना कि दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। वो कहावत आज हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही सफलतापूर्वक अपनी दिल क्या जान लगा के हर चीज़ अपने पूरा एक डेडिकेशन से, कितने दिन से वो अपने परिवार से दूर रहे होंगे, कितना डेडिकेशन से ये काम हुआ होगा, इसके बारे में कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें निकल के आएंगी। जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इसरो के वैज्ञानिक हैं, वो बताएंगे हमारे युवाओं को कि इस पे क्या क्या लगा है, कितना टाइम लगा है, कितना टाइम उन्होंने इस पे दिया है। वो चीज़ें तो अभी आनी बाकी हैं, जो कि एक युवाओं के लिए बहुत ही मोटिवेशनल होगा और आने वाली युवा पीढ़ी देश के लिए कुछ ऐसे ही कारनामे बार बार करती रहे, यही एक हमें उम्मीद है। और अगेन भारत का नाम विश्व के पटल पे, संसार में बहुत आगे ले जाने के लिए आज हमारा भारत संसार में एक अलग ही पहचान बना चुका है और पूरा वर्ल्ड भारत की तरफ देख रहा है। इसके लिए अगेन इसरो के जो हमारे वैज्ञानिक भाई हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हेलो एवरीवन। आज हमारे देश का मान और सम्मान जो कि हमारा तिरंगा, हमारे वैज्ञानिकों ने, इसरो के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो चाँद पर जो हमारा जो तिरंगा इतनी सफलतापूर्वक, इतने बेहतरीन तरीके से जो चाँद पे जो तिरंगा फहराया है, एक देश की आन बान शान, उन सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक इतना बड़ा काम, इससे देश को नई डायरेक्शन, देश के युवा को नई सोच देने का काम करेगी, मेरा ये मानना है। जैसे कि क्रिकेट को पहले कौन जानता था? कपिल देव जी ने जो पहला वर्ल्ड कप जीता 1983 में, उसके बाद क्रिकेट बढ़ा इंडिया में आगे और देश का युवा जानने लगा कि ये भी कोई गेम है। तो ऐसे ही अलग अलग हम गेमों की बात करें तो जो भी कोई बड़ा काम होता है गेम में करें या फिर हमारे साइंटिस्टों ने किया है, तो इसी तरीके से ये युवा आगे ज़रूर उसका इफेक्ट पड़ता है युवा पे। और जो हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, इसका आने वाली हमारी जनरेशन पे इतना पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले 20 साल में देखना कि हमारे युवा, जो हमारे युवा वैज्ञानिक होंगे, जो आज बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आने वाले कुछ टाइम वो वैज्ञानिक भी बनेंगे,
साइंटिस्ट बनेंगे, बहुत टॉप लेवल पे जाएंगे और इस देश का नाम, ये तो एक चाल जो है, एक चलन बन गया है अब, जो कि एक इसरो के हमारे वैज्ञानिकों ने दिया है आने वाली युवा को। कहते हैं ना कि दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। वो कहावत आज हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही सफलतापूर्वक अपनी दिल क्या जान लगा के हर चीज़ अपने पूरा एक डेडिकेशन से, कितने दिन से वो अपने परिवार से दूर रहे होंगे, कितना डेडिकेशन से ये काम हुआ होगा, इसके बारे में कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें निकल के आएंगी। जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इसरो के वैज्ञानिक हैं, वो बताएंगे हमारे युवाओं को कि इस पर क्या क्या लगा है, कितना टाइम लगा है, कितना टाइम उन्होंने इस पर दिया है। वो चीज़ें तो अभी आनी बाकी हैं, जो कि एक युवाओं के लिए बहुत ही मोटिवेशनल होगा और आने वाली युवा पीढ़ी देश के लिए कुछ ऐसे ही कारनामे बार बार करती रहे, यही एक हमें उम्मीद है। और अगेन भारत का नाम विश्व के पटल पे, संसार में बहुत आगे ले जाने के लिए आज हमारा भारत संसार में एक अलग ही पहचान बना चुका है और पूरा वर्ल्ड भारत की तरफ देख रहा है। इसके लिए अगेन विश्व के जो हमारे वैज्ञानिक भाई हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर विजयपाल नैन। आज एक इतना बड़ा काम, भारत देश का मान सम्मान और जो हमारा तिरंगा, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने जो चांद पर फहराया है, इतने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको मतलब जो है ना चांद पर फहराने का काम जो किया है, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और यहाँ से जो है मैं ये सोचता हूँ, ये एक शुरुआत है देश के लिए और हमारे देश के युवाओं के लिए कि कोई भी बड़ा काम होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे क्रिकेट में कपिल देव जी जब इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीत के लाए, तो उससे पहले क्रिकेट को कोई नहीं जानता था और जैसे ही एक बड़ा काम था वो, ऐसे उसके बाद कितने युवा उसमें आए आगे और आज हमारा वो जो क्रिकेट का जो है वो किस लेवल पे है। ऐसे ही आप दूसरे गेम्स को देखें, जैसे मैं रेसलिंग की बात करूं, सुशील कुमार जी, योगेश्वर भाई ने किस कुश्ती को दोबारा ज़िंदा किया। आज कितने पहलवान निकल के हमारे कितने मेडल आते हैं ओलंपिक में। और ऐसे ही जो हमारे दूसरे प्लेयर जो हैं क्रिकेट के अलावा, रेसलिंग के अलावा, गीता फोगाट जो फोगाट बहनें हैं, उन्होंने लड़कियों के लिए, लड़कियों को आगे आने के लिए उन्होंने भी अपने आप को मतलब वो भी एक आइडल बनी है इस देश की युवा लड़कियों के लिए। ऐसे ही नीरज चोपड़ा जी हैं, भाला फेंक कोई नहीं मतलब जो है देश में कोई नहीं जानता था इतना, लेकिन अब देखना आगे आने वाले टाइम में उसमें भी बच्चे काफ़ी निकलेंगे। इससे बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है, उस तरफ सोचने के लिए बच्चे मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही इतना बड़ा काम हमारे वैज्ञानिकों ने, आज इसरो के वैज्ञानिकों ने जो देश का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए पूरे संसार में, आज देश की तरफ, हमारा भारत देश की तरफ पूरा विश्व देख रहा है और 140 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं, मुझे लगता है कि उसमें कोई भी मतलब एक एक आदमी बहुत उसको बारीकी से देख रहा था। आप सोशल मीडिया पे देखें, वैसे भी देखें। तो मैं कल एक सब्जी वाले के पास खड़ा था शाम को,
सब्जी वाला भी मतलब जो है ना चंद्रयान 3 के बारे में बात कर रहा था। तो ये क्या, इससे बड़ा मतलब वैज्ञानिकों को इससे बड़ा मोटिवेशनल क्या होगा। उन्होंने उस चीज़ को गली गली और घर घर तक एक इतने बड़े मिशन को, और उनकी एक दुआएं जो थी, हर भारतवासी की दुआएं उनके साथ थी, दुआओं के साथ मेहनत भी उन लोगों ने की है। कहते हैं दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, वो कहावत मतलब जो है, और ये गाना भी मतलब चलता है काफ़ी। ऐसे ही हमारे इसरो के जो वैज्ञानिकों ने पूरा दिल जान जी जान से जो मतलब ये कारनामा जो किया है, देश का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए पूरे संसार में, बधाई के पात्र तो हैं ही वो। और इससे मतलब देश को एक नई डायरेक्शन मिलेगी। यही मतलब जो है आने वाले टाइम में बहुत सारे बच्चे जैसे चंद्रयान 3 जो इसरो की तरफ, स्कूलों के बच्चे जो आजकल हैं इस तरफ सोचना स्टार्ट करेंगे। हम भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, हम भी आगे देश का मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। और अब ये शुरुआत है, ये सिलसिला चलता रहेगा, यही हमें एक उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारे अगेन इसरो के वैज्ञानिकों को जिन्होंने ये खुशी का पल 140 करोड़ भारतवासियों को दिया है, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू टू। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर विजयपाल नैन। आज एक इतना बड़ा काम, भारत देश का मान सम्मान और जो हमारा तिरंगा, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने जो चांद पर फहराया है, इतने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको मतलब जो है ना चांद पर फहराया, नया काम जो किया है, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ से जो है मैं ये सोचता हूँ ये एक शुरुआत है देश के लिए और हमारे देश के युवाओं के लिए कि कोई भी बड़ा काम होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे क्रिकेट में कपिल देव जी जब इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीत के लाए, उससे पहले क्रिकेट को कौन जानता था। और जैसे ही वो एक बड़ा काम था वो, ऐसे उसके बाद कितने युवा उसमें आए आगे, और आज हमारा वो जो क्रिकेट का जो है वो किस लेवल पे है। ऐसे ही आप दूसरे गेम्स को देखें, जैसे मैं रेसलिंग की बात करूँ, सुशील कुमार जी, योगेश्वर भाई ने किस कुश्ती को दोबारा जिंदा किया। आज कितने पहलवान निकल के हमारे कितने मेडल आते हैं ओलंपिक में। और ऐसे ही जो हमारे दूसरे प्लेयर जो हैं क्रिकेट के अलावा, रेसलिंग के अलावा, गीता फोगाट जो बहनें हैं, उन्होंने लड़कियों के लिए, लड़कियों को आगे आने के लिए उन्होंने भी अपने आप को मतलब वो भी एक आइडल बनी है इस देश की युवा लड़कियों के लिए। ऐसे ही नीरज चोपड़ा जी हैं, भाला फेंक कोई नहीं मतलब जो है देश में कोई नहीं जानता था इतना, लेकिन अब देखना आगे आने वाले टाइम में उसमें भी बच्चे काफ़ी निकलेंगे। इससे बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है, उस तरफ सोचने के लिए बच्चे मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही इतना बड़ा काम हमारे वैज्ञानिकों ने, आज इसरो के वैज्ञानिकों ने जो देश का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए पूरे संसार में, आज देश की तरफ, हमारा भारत देश की तरफ पूरा विश्व देख रहा है। और 140 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं, मुझे लगता है कि उसमें कोई भी मतलब एक एक आदमी बहुत उसको बारीकी से देख रहा था। आप सोशल मीडिया में देखें, वैसे भी देखें। तो मैं कल एक सब्जी वाले के पास खड़ा था शाम को, सब्जी वाला भी मतलब जो है ना चंद्रयान 3 के बारे में बात कर रहा था। तो ये क्या, इससे बड़ा मतलब वैज्ञानिकों को इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा। उन्होंने उस चीज़ को गली गली और घर घर तक एक इतने बड़े मिशन को, और उनकी एक दुआएं जो थी, हर भारतवासी दुआएं उनके साथ थी, दुआओं के साथ मेहनत भी उन लोगों ने की है। कहते
कहते हैं दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, वो कहावत मतलब जो है, और ये गाना भी मतलब चलता है काफ़ी। ऐसे ही हमारे इसरो के जो वैज्ञानिकों ने पूरा दिल जान जी जान से जो मतलब ये कारनामा जो किया है देश का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए पूरे संसार में, बधाई के पात्र तो है ही वो। और इससे मतलब देश को एक नई डायरेक्शन मिलेगी। यही मतलब जो है आने वाले टाइम में बहुत सारे बच्चे जैसे चंद्रयान 3 जो इसरो की तरफ स्कूलों के बच्चे जो आजकल हैं इस तरफ सोचना स्टार्ट करेंगे। हम भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, हम भी आगे देश का मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। और अब ये शुरुआत है, ये सिलसिला चलता रहेगा, यही हमें एक उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारे अगेन इसरो के वैज्ञानिकों को जिन्होंने ये खुशी का पल 140 करोड़ भारतवासियों को दिया है, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र है। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू टू
आ जाते हैं।